obviously about the precipitation. There will be some definitions that will be required during the understanding of this particular precipitation, that is your uh, runoff, then the rainfall intensity. So these kind of things will be there, and we shall be understanding the topic of unit hydrograph in this particular way. Okay, so give me a few seconds so that I can present the thing that is going to be discussed with you for our today's class. So this is it, the unit hydrograph. In some of the cases you will be finding at UH, or in some of the cases you may find it as UHG. Okay, unit hydrograph. So first of all, we will try to understand what is the definition or characteristics of this particular topic. Okay, unit hydrograph. Now what they have said is that it is the unit pulse response function of linear hydrologic system. Okay, so this may sound a bit difficult to all of you, but at the same time you need to find the meaning and meaning of each and every word, so that you can easily understand what is going to happen with this. Okay, so they have said is that it is the unit pulse response, okay, function response function of a linear hydrologic system. Okay, so that means the hydrologic system, that means whatever be the rainfall that is happening for some amount of time, how the water is getting discharged from that particular place after the rainfall, each and everything are recorded. Okay, and they are actually defined in the graphical way. Okay, how the definition of that graphical representation comes into the picture, how this particular study is actually developed by the different researchers, and what is the response of the different parameters associated with it, we will try to understand in the next few minutes. So it was first proposed by Sherman, okay, 1932. The unit hydrograph, originally named obviously unit graph. Okay, so first of all it was named as the unit graph, it wasn't unit hydrograph. Later on the name was changed on the basis of the fact that water is involved in it. Okay, so that is why it is known as the unit graph at the first place. But nowadays it is unit hydrograph. Okay, so obviously the hydro means the water, so that is why it is unit hydrograph. Now it was defined by Sherman as a direct runoff hydrograph. Okay, DRH, direct runoff hydrograph. So that is why DRH defined as a direct runoff hydrograph resulting from 1 inch. Okay, 1 in means 1 inch. Actually, he was a researcher based from the United Kingdom, so that is why he used the method of FPS while calculating the rainfall data. In our Indian context, that value is taken in 1 centimeter. Okay, so you do not need to be worried about that, because whatever may be 1 inch is 1 centimeter. Okay, in our system. Okay, not as per their value, but as per their significance, because we are talking about unit hydrograph. Unit means one. Okay, so that is what
the unity term has been taken into account. जो डेफिनेशन है हम अभी खत्म करते हैं इसको पहले. It is the direct runoff hydrograph resulting from 1 inch of excess rainfall generated uniformly over the drainage area at a constant rate of for an effective duration. Okay, so it is the excess rainfall of 1 inch generated uniformly over the drainage area at a constant rate for an effective duration. Okay, at a constant rate for an effective duration. The duration will be for few minutes to even few hours also. मतलब क्या है, ये जो रिसर्चर थे शर्मन, उन्होंने बताया कि यूनिट हाइड्रोग्राफ एक वाटरशेड का एक ऐसा चीज है जो कि डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ होता है रिजल्टिंग फ्रॉम 1 इंच ऑफ एक्सेस रेनफॉल. 1 इंच का जो एक्सेस रेनफॉल होता है जो कि एक जगह पे सॉरी जो कि एक जगह पे जाके जमा हो रहा है और उसके साथ साथ एक ड्रेनेज एरिया भी है जहां से पानी निकल रहा है एक कांस्टेंट रेट पे एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फिक्स टाइम के लिए. ठीक है, ये स्मॉल अमाउंट एक कुछ मिनट का भी हो सकता है तो कुछ घंटे का भी हो सकता है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक सेंटेंस में लिखा हुआ है 1 इंच. ओके, 1 इन लिखा है, उसका मतलब है 1 इंच. 1 इंच लिखा है, उसके बाद ही ब्रैकेट में लिखा गया है यूजुअली टेकन एज 1 सेंटीमीटर इन एसआई यूनिट. ओके, मतलब कि हम लोग अगर एसआई यूनिट को लेके काम करते हैं तो ये यूनिट वैल्यू होगा 1 सेंटीमीटर का. ठीक है, लेकिन अगर हम लोग एफपीएस सिस्टम में जाते हैं, जो एफपीएस सिस्टम में ये डेफिनेशन बना गया था उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि ये वैल्यू होगा 1 इंच का. ठीक है, तो डेफिनेटली ये वैल्यू उसी के वजह से चेंज होगा. नाउ Sherman originally used the word unit to denote unit of time. Okay, but since the time it has often been interpreted as unit depth of excess rainfall. ठीक है, ये जो 1 सेंटीमीटर का हम लोग जो रेनफॉल नापते हैं या फिर शर्मन ने जो 1 इंच का रेनफॉल नापा था ये हमेशा डेप्थ के हिसाब से ही देखा जाता है. क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि हमारे पास बहुत सारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जहां पे हम लोग रेनफॉल मेजरमेंट कर सकते हैं. ठीक है, ये जो रेनफॉल मेजरमेंट हम लोग करते हैं वहां पे हम लोगों ने देखा है कि जो बारिश का जो पानी जमा हो रहा है उसके ऊपर जो मेजरिंग डिवाइस है उसमें 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ये सब ग्रेजुएशन दिया हुआ होता है. ठीक है, जैसे कि इन सिंपल वर्ड्स एक तुम लोगों के पास मेजरिंग कोन है जो जिससे कि तुम लोग कितना लिक्विड है वो मेजर कर सकते हो और मेजरिंग कोन के अंदर अगर तुम लोग देखते हो तो पानी अंदर अंदर जमा होता है. ठीक है, तो ये ऑब्वियसली जो एक्सेस रेनफॉल का वैल्यू हम लोग देखते हैं ऑब्वियसली यूनिट डेप्थ के लिए हम लोग नापते हैं. ठीक है, यूनिट हाइड्रोग्राफ जब हम लोगों को बनाना पड़ता है तो उसके वजह से जो यूनिट का जो कॉन्सेप्ट है वो होगा यूनिट डेप्थ के हिसाब से. लेकिन शर्मन ने इनिशियली ये सोचा था कि ये यूनिट टाइम के हिसाब से होता है. ठीक है, नाउ शर्मन क्लासिफाइड runoff into surface runoff and groundwater runoff and defined the unit hydrograph for use
ओनली विथ सरफेस रन ऑफ। ठीक है, इसका मतलब क्या है? शर्मन का जो मेथड था पहले, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, जो रन ऑफ का जो हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, उसमें जो रन ऑफ का कॉन्सेप्ट है, मतलब जो पानी बह रहा है, वो पानी दो जगह से बह सकता है। एक है सरफेस के ऊपर से, दूसरा है अंडरग्राउंड से। ठीक है, तो शर्मन ने जो डिफिनेशन दिया था उसमें सिर्फ उन्होंने सरफेस रन ऑफ को ही लिया था। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पानी है, तुरंत गिरने के बाद वो मिट्टी उसको खींच लेता है अपने तरफ। ठीक है, और वो अंडरग्राउंड में चला जाता है। तो वो जो अंडरग्राउंड का जो रन ऑफ होता है, ठीक है, उसको शर्मन ने कंसिडर नहीं किया था पहले। ठीक है, सो दैट इज अनदर थिंग दैट शर्मन have developed, and later on it was further developed by other researchers. Okay, now the unit hydrograph's definition in simple words: it is a simple linear model that can be used to derive the hydrograph resulting from any amount of excess rainfall. Okay, एक सिंपल लिनियर मॉडल है जो हम लोगों को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मिलता है। क्यों? क्योंकि एक्सेसिव रेनफॉल हुआ है। ठीक है, सो फॉलोइंग assumptions आर taken into consideration while this definition will be implemented. Okay, रेनफॉल एक्सेस मतलब जो ज्यादा रन रेनफॉल हुआ है of equal duration are assumed to produce hydrographs with equivalent time basis regardless of the intensity of the rain. ठीक है, now this thing we will be understanding through some pictures. Okay, so let me show you one more thing, and then you will be able to understand what I am actually telling. So I hope that you can find this particular whiteboard right now. Okay, so in this particular whiteboard, what I'm going to do, I'm going to draw something. Okay, so this is your intensity, and this is your time. Now there are two hydrographs. Okay, this one, another one is this one. Okay, so it is clearly visible that both of them are having the different values of the intensity. Okay, now according to the definition, this excess rainfall of equal duration, okay, I am considering the duration as the this one. Okay, this maximum duration is over here. So this 1 and 2, these two graphs are having similar intensity, sorry, different intensity, but having the similar time of the rainfall. Okay, so they produce hydrographs with equivalent time basis regardless of the intensity of the rain. Okay, so this is what we were talking about.
Now let us get back to that second point. Okay. The second point is direct runoff ordinates from a storm of given duration are assumed directly proportional to rainfall excess volume. Okay. So there is another term, rainfall excess volume. Okay. Which is nothing but the calculation of the volume of the excess rainfall. Okay. So direct runoff ordinates for a storm of a given duration are assumed directly proportional to rainfall excess volumes. ओके, इसका मतलब यह है कि डायरेक्ट रन ऑफ का जो ऑर्डिनेट है, ठीक है, डायरेक्ट मतलब सॉरी जो ऑर्डिनेट होता है फॉर ए स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब कि बारिश, ऑब्वियसली यहाँ पे स्टॉर्म का मतलब ये नहीं है सिर्फ मतलब स्टॉर्म होगा वहाँ पे बहुत हाई इंटेंसिटी का मतलब विंड बहेगा ऐसा नहीं है, ठीक है, हवा बहने वाला है ऐसा नहीं, स्टॉर्म का मतलब है एक बारिश, ठीक है, ऑफ ए गिवन ड्यूरेशन मतलब जो टाइम दिया जाता है गिवन ड्यूरेशन के लिए आर एज्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेनफॉल एक्सेस वॉल्यूम, ठीक है। तो जो रेनफॉल एक्सेस वॉल्यूम है उसके साथ ये डायरेक्ट रन ऑफ प्रोपोर्शनल होगा। थर्ड इज द टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ इज अज्यूम्ड इंडिपेंडेंट ऑफ एंटीसीडेंट प्रेसिपिटेशन। एंटीसीडेंट प्रेसिपिटेशन का मतलब है को जो उसके पहले हो चुका है वो रेनफॉल, ठीक है। तो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ इज इंडिपेंडेंट। जो डायरेक्ट रन ऑफ है हम लोगों का रन ऑफ बहुत सारा होता है, सरफेस रन ऑफ होता है, अंडरग्राउंड रन ऑफ होता है, डायरेक्ट रन ऑफ होता है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट रन ऑफ को लेके ही ज्यादा काम करेंगे, ठीक है। वो हम लोग को कैसे मिलेगा वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसके पहले जो बारिश हुआ है उससे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इज अज्यूम टू बी सेम फॉर ऑल स्टॉर्म्स ऑफ इक्वल ड्यूरेशन। ओके, तो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो वो सेम हम लोग मानते हैं हर एक छोटा छोटा बारिश के लिए, ठीक है, ऑफ इक्वल ड्यूरेशन, जो कि एक फिक्स्ड समय के लिए और इक्वल समय के लिए होता है। नाउ दिस वन, डिराइवेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। ओके, एक देख सकते हो यहाँ पे एक ग्राफ तरह का बना हुआ है, तो ठीक है, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है क्यू विद इन ब्रैकेट सी एफ एस। इसका मतलब है क्यूबिक फीट पर सेकेंड, और क्यू का जो मतलब है वो है हम लोगों का डिस्चार्ज, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रॉब्लम में भी हम लोग पढ़े थे कि क्यू का मतलब होता है डिस्चार्ज, ठीक है। नाउ देयर आर फ्यू टर्म्स which you need to understand in order to understand this in a better way. So first one is definitely your duration. So I guess that you can understand this particular thing, duration, what is meaning, what is the meaning of the duration. You are all aware of that. It is the time from start to finish of effective rainfall. Okay. Now there is another term, effective rainfall. We will try to understand later on. Okay, what is your effective rainfall? Because that is also required. The second one is the lag time. Okay, now lag time is defined as the time from the center of mass rainfall excess to the peak of the hydrograph. Okay, तो जो मार्क्स एक रेनफॉल होता है उससे जो पीक होता है हाइड्रोग्राफ का, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पीक जो है, जो कि यहाँ पे हम लोग का फोटो जो हम लोग ग्राफ जो बनाया गया है, पीक मतलब हाईएस्ट वैल्यू होता है जो हाइड्रोग्राफ का उसी का,
ठीक है। तो जो टाइम का डिफरेंस होता है वो होता है लैग टाइम। ऑब्वियसली लैग मतलब पिछड़ा हुआ, ठीक है। जो दोनों का डिफरेंस है वो है लैग टाइम, ठीक है। देन द थर्ड सेंटेंस डेफिनेशन इज टाइम ऑफ राइस। ओके, टाइम ऑफ राइस, यहाँ पे देखो उसके बगल में लिखा हुआ है TR, ठीक है। द टाइम ऑफ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एक्सेस रेनफॉल to the peak of the hydrograph. In this particular figure, you can easily identify TR. When the start of the peak rainfall started, sorry, the start of the excess rainfall was taking place, it was considered as zero. Okay, and to that, the peak, that is the highest point of this particular picture or in the graph, is the peak of the hydrograph. So the time difference between these two is taken as TR, that is the time of rise. And there is another definition at the end, that is the time base. Okay, TB, it is the total duration of the direct runoff hydrograph. ओके, तो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का जो टोटल ड्यूरेशन होता है वो होगा मेरा टाइम बेस। नाउ there are some rules that are to be observed in developing unit hydrograph from gauged watershed. Gauged watershed मतलब हम लोगों का जो रेन गेजेस जहाँ पे रखा हुआ होता है उसका जो वैल्यू है उसको काम पे लगा के हम लोग कैसे यूनिट हाइड्रोग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कुछ नियम है, देयर आर सर्टेन रूल्स दैट यू नीड टू फॉलो। ओके, द फर्स्ट थिंग इज दैट watershed sizes should generally fall between 1 and 100 square meter in modern watershed. ओके, तो मैंने दूसरा पॉइंट पहले बताया क्यों, क्योंकि वाटरशेड का जो साइज होता है वो जनरली इतना होना चाहिए, 1 से 100 स्क्वायर मीटर के आसपास, ठीक है। द सेकेंड वन इज, आई हैव मेंशन फर्स्ट, बट इट इज ऑफ हाईएस्ट इंपॉर्टेंस। ओके, सो वाटरशेड जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उसका महत्व क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसको पहले हम लोग को डिफाइन करना पड़ता है कि ये मेरा जगह है, इसी को लेके मुझे काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि हर किसी जगह को हम लोग काम पे लगाएंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज storm should be selected with simple structure with relatively uniform spatial and temporal distribution. So you do not need to be worried about spatial or uniform distribution. Actually, whenever you will be doing the analysis of those particular graphs, then you will need to understand it. So that is not your point of interest as of now. There are something else which you can easily remember next. Okay, then then the next point is direct runoff should be of range of 0.5 to 2 inches. Okay, now again I am telling you, whenever you will be finding that there is a value related to inches, you do not need to be worried, because in Indian system we generally follow the SI rule. Okay, SI units, but it was actually invented by some British researchers. So that is why these terms of feet, pounds, inches, this kind of things will be coming. Okay. Next one is duration of rainfall excess should be approximately 25 to 30% of the lag time. Okay. So duration of rainfall excess should be approximately 25 to 30% of the lag time. Okay. Next, number of storms of similar duration should be analyzed to obtain an average unit hydrograph for that duration. So सिमिलर ड्यूरेशन का जो स्टॉर्म होगा
उसी को हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है, जब हम लोगों को एवरेज यूनिट हाइड्रोग्राफ लेना होगा, ठीक है। Now here they have mentioned that step 5 should be repeated for several rainfall of different duration. ओके, ये जो मैंने फिक्स ड्यूरेशन मान लिया है, मानो 2 घंटे का फिक्स ड्यूरेशन है, उसको हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा भी रेनफॉल हो सकता है जो कि लगातार 3 घंटे के लिए सेम है, लगातार 4 घंटे के लिए सेम है, तो उसको लेके भी हम लोगों को सोचना होगा, ठीक है। ये मानो हम लोगों के पास एक रेनफॉल का डेटा आ रहा है, ठीक है। बहुत लंबे समय तक का डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है। लंबे समय का मतलब कभी कभी कुछ दिनों के लिए, कभी कभी कुछ महीनों के लिए, कभी कभी कुछ सालों के लिए भी, ठीक है। तो फॉर दिस वेरी रीजन we need to think of different type of duration for different time of the year. Okay, so definitely in the months of June to August, where it is predominantly the rainy season in most of the parts of the India, we will need to think about calculating the values. But there are some areas also in India, say for example Assam, then Tamil Nadu, Kerala. There are some areas, or in Mumbai also, where there is a chance of rainfall in other months also, except the rainy season. Okay, like in the months of September, October, even in November, we were able to we got to see that there were some amount of rainfall that was happening. Okay, so due to the depression caused in the Bay of Bengal, there are some areas in Andhra or Odisha also, they were also affected. So that is why for different type of the duration we need to take care of the rainfall, because at these different times the rainfall will not be same, जो कि समय अगर अलग होता है साल का, एक अलग अलग समय पे जो रेनफॉल है उसका वैल्यू अलग अलग होगा, तो इसके लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा वैल्यूज लेना होगा, ये यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो वैल्यू है उसको लेने के लिए। Now what they have said is that essential steps for developing unit hydrograph from single storm hydrograph. So first of all, analyze the hydrographs and separate base flow. Okay, हाइड्रोग्राफ एनालाइज करके हम लोग को बेस फ्लो को अलग करना होगा, ठीक है। देन मेजर द टोटल वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ अंडर द हाइड्रोग्राफ एंड कन्वर्ट टाइम टू इंचेस ओवर द watershed. ओके, सो टोटल वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ का हम लोगों को मतलब मेजरमेंट करना होगा, फिर कन्वर्ट टाइम टू इंचेस over watershed. Okay, now how to convert it, we may understand it in a graphical way. Okay, so there will be some graphical representation also which will be required, which we need to understand. Okay, then convert total rainfall to rainfall excess through infiltration methods such that rainfall excess equals to direct runoff, and evaluate the duration of the rainfall excess that produce the direct runoff. So it is very simple. We need to convert the total rainfall to rainfall excess. Obviously, there is a method which is known as the infiltration method. Then evaluation of the duration of the rainfall excess will be there. Okay, that produce the direct runoff hydrograph. Next one is divide the ordinates of the direct runoff hydrograph by the volume of inches, volume in inches. Okay, सो जो रन डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का जो वॉल्यूम होगा उसको हम लोगों को ऑर्डिनेट
डिवाइड करना होगा, ठीक है। डिवाइड द ऑर्डिनेट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बाय वॉल्यूम, ओके, and plot the results as unit hydrograph for the basin. Okay, whenever you will be finding it difficult, okay, do not be panicked. I will be showing you the graphical representation of it later on. Then these things will be very very clear to you. Okay, next one is the time base is assumed constant for storms of equal duration. Okay, thus it will not change. Okay, and the last one is check the volume of unit hydrograph to make sure it is 1 inch and graphically adjust ordinate. ओके, सो यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो वॉल्यूम होगा उसको हम लोगों को चेक करना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली यूनिट वैल्यू हम लोग को कंसिडर करना होगा 1 इंच का, जो कि हम लोग ग्राफ से कभी भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं. Now there is a given problem through which we can try to understand the unit hydrograph. Okay, obviously for a basin of 315 square kilometers of area, the rainfall and stream flow data tabulated are below. Okay, so rainfall data is given in the right hand side table, where time and gross precipitation are given. Okay, gross PPT means gross precipitation, and on the left hand side table there is observed hydrographs. Okay, for different duration. Okay, 1, 2, 3, 4. These are the hours, and there are observed hydrographs that are given. So from here you will need to find one unit hydrograph. So first of all, what they have done, they have taken the total volume of the direct runway hydrograph. Okay, direct run of hydrograph. So they have just added this particular values. Okay. Now, empirical unit hydrograph derivation separates the bed flow from the observed stream flow hydrograph in order to obtain the direct run of hydrograph. Okay. For example, use horizontal line method to separate the base flow. There is a method called horizontal line to separate the base flow. From the observed hydrograph data, the stream flow at the start of the rising limb is hydrograph or is 100 meter cube per second. Okay, in the given values in the previous page, just I will showing you. Right, just a few seconds. ये पर देखो डिफरेंट वैल्यूज दिया हुआ है ऑब्जर्व हाइड्रोग्राफ का. ये जो टेबल है 100, 100, 300, 700, 1000, 800 in this way. Okay, the addition has been taken place in the next step, that is the addition of 100, 100, 800, 600 in this way. Okay, now direct runoff in equivalent units of depth is equals to the volume of direct runoff hydrograph divided by the area of the basin. Okay, so volume of the direct runoff hydrograph we have got in this particular line. Okay, 126000000. Okay, this meter cube divided by the area of the basin, that is given in the problem as 315 square kilometers. So from there this value of depth is coming as 4 centimeters. Okay, just volume divided by area will give you the depth value. Now how to obtain the graph itself? Okay,
We will now try to understand in the through the particular table. So in this table they have written the values once again, that is time and the observed hydrograph. Okay, 100, 100, 300, 700, 1000, 800, 600 in this way. Okay. Now on the right hand side, another column is prepared by direct runoff hydrograph. Okay. So direct runoff hydrograph are also observed, and that is 0, 0, 200, 600, 900. These are the values that you have added in this previous step. Okay. Here you have added this particular thing. Okay. So there are direct hydrograph values also, direct runoff hydrograph values, which are given over here. Now from there you will need to find unit hydrograph. Okay. Now unit hydrograph is been prepared as in this way. Okay. You can see the table. It is actually the direct runoff hydrograph divided by the depth of the excessive rainfall. Okay. So in the third column there is a value of 200. If you divide it by 4, it will give you the 50 value, which is the value of unit hydrograph corresponding to direct runoff hydrograph of 200. Okay. Then there is a value of 600 in the next. Okay. On the time duration of the 3 hours. Okay. 600 divided by 4 is giving you 150. That is your unit hydrograph. So in this way, similarly, 900 by 4 is 225, 700 by 4 is 175. So this is how you have obtained the different values of the unit hydrograph. ठीक है. ये जो चीज है, ये कोई है जिसको समझ में नहीं आया? अगर अगर नहीं आया तो बोलो, मैं रिपीट करूंगा. From the entire class, is there anyone who didn't understand? Please tell me. I will repeat this particular thing. सूरज, सूरज आनंद, यस सर। ये मैंने अभी जो बोला तुम्हें समझ में आया ठीक से? नो सर, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। कंफ्यूजन हो गया? कैसे? कौन सा स्टेप बोलो? सर लास्ट जो यूनिट हाइड्रोग्राफ से जो निकाला गया है उसमें सर हाँ, देखो उसके पहले वाले कॉलम में लिखा हुआ है, डायरेक्ट रेन ऑफ ठीक है, हाइड्रोग्राफ। डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ. जी उसका वैल्यू हम लोगों को पता है. जी ठीक है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का वैल्यू हम लोगों को पता है. अब उसके साथ हम लोग कुछ डिवाइड करेंगे. क्या डिवाइड करेंगे? देखो, उसके पहले स्टेप में ये जो मुझे मिला है, एकदम आखिरी लाइन पे देखो, वी डी आर एच इन इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ डेप्थ. ये जो डेप्थ का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर का डेप्थ हम लोग इसके साथ डिवाइड करेंगे. सर, क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया। ठीक है, अगर उसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को बहुत ही आसानी से ये वैल्यूज मिल जाएगा. ठीक है. So here is a graphical representation. In the y-axis, there is a discharge in meter cube per second. In x-axis, there is time. Okay. Now there are 2 to 3 lines that are actually prepared in this one. First one is your observed hydrograph.
The second one is your direct runoff hydrograph. Okay. If you divide the direct runoff hydrograph with the depth of the excess rainfall, then this unit hydrograph could be obtained. Okay. So again, there is another problem that has been given. They have given that determine the duration of excessive rain runoff hydrograph associated with unit hydrograph obtained in Ford. तो यूनिट हाइड्रोग्राफ का हम लोग का निकालना है जो कि 4 डेप्थ से मिला था, ठीक है। उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जब प्रेसिपिटेशन हम लोगों ने समझा था, याद करके देखो, हम लोगों ने बोला था कि प्रेसिपिटेशन पे बहुत सारा चीज है जो कि आगे जाके काम पे लगता है, जैसे कि प्रेसिपिटेशन का लॉसेस, ठीक है। एक प्रेसिपिटेशन जब हो रहा है, मतलब बारिश जब गिर रहा है, थोड़ा बहुत उसका पार्ट हम लोग देख सकते हैं कि सरफेस के आके गिरेगा, जो सरफेस है, मतलब छत का सरफेस हो सकता है, किसी घर का जो छत बना हुआ है उसका हो सकता है, किसी पेड़ पौधे का अंश हो सकता है, फिर कुछ सर मतलब जो सरफेस है, अर्थ सरफेस, उस पे आके गिरेगा मिट्टी के ऊपर। तो उसके वजह से जो पानी गिर रहा है उसका मेजरमेंट हम लोग जब लेते हैं, तो सारे चीजों को हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा क्या, क्योंकि जो पानी एक पेड़ पौधे के ऊपर आ रहा है, जो पानी मिट्टी खींच लेता है अपने तरफ नीचे तक, ठीक है, सारे चीजों को हम लोग को कंसिडर करना। अब कंसिडर करने के बाद हम लोगों को जो मिलेगा वो हम लोगों का होगा इफेक्टिव रेनफॉल, ठीक है। तो इफेक्टिव रेनफॉल को हम लोगों को यहाँ पे कंसेप्ट को लाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे देखो, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ लॉसेस, ठीक है। जो लॉसेस हो रहा है, क्यों लॉस हो रहा है, कुछ पेड़ पौधे पे जा रहा है, कुछ गटर पे जा रहा है, ठीक है, मतलब जो ड्रेन है उसके साथ निकल जा रहा है, ठीक है। तो इसी के वजह से हम लोगों का जो वॉल्यूम है लॉस हो रहा है, लॉसेस इन द वॉल्यूम। तो लॉसेस इन वॉल्यूम को हम लोग ग्राफिकली अगर हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, वो होगा मेरा वॉल्यूम ड्यू टू ग्रॉस रेनफॉल माइनस वॉल्यूम ऑफ द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ग्रॉस रेनफॉल वी सफिक्स जी आर एच माइनस ऑफ वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ, ठीक है। जो डायरेक्ट रन ऑफ है वो मुझे कैलकुलेशन के हिसाब से मिल रहा है, और जो ग्रॉस रेनफॉल है उसको मुझे निकालना है। अगर जो कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं उसके साथ अगर जो लॉस हो रहा है उसको हम लोग जोड़ देते हैं, तो हम लोगों को मिलेगा कि टोटल ग्रॉस रेनफॉल, ठीक है। So gross rainfall minus the runoff is your losses. Okay. So here this particular thing will be coming down as 2 सेंटीमीटर, ठीक है। जो ग्रॉस रेनफॉल का वैल्यू है 4 घंटे के लिए वो है 0.5, 2.5, 2.5 और 0.5 सेंटीमीटर, जो चार हम लोगों को वैल्यू मिला था पहले, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ग्रॉस रेनफॉल। नाउ there is another term known as the phi index or F index. Okay, it is equal to the ratio of volume of losses to the rainfall duration. अब 4 घंटे का हम लोगों को रेनफॉल ड्यूरेशन मिला था 0.5, 2.5, 2.5 और 0.5। अगर किसी के मन में ये सवाल है कि ये हम लोगों को कहाँ पे मिला था, कि सर कैसे ये 0.5, 2.5 आप ये बोल रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग फिर से चले जाते हैं ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ था वहां पे, ठीक है। यहाँ पे देखो ग्रॉस प्रेसिपिटेशन या फिर ग्रॉस रेनफॉल, रेनफॉल डेटा का जो वैल्यू है, फॉर फर्स्ट आवर इट इज 0.5, फॉर सेकेंड आवर इट इज 2.5, थर्ड आवर 2.5, फोर्थ आवर अगेन 0.5। ओके, सो
From here, we can easily find out the gross rainfall value. Okay, so we have added these four values of 0.5, 2.5, 2.5, and zero point 0.5. Okay, I hope there should not be any kind of confusion for you. Minus the direct runoff hydrograph. Okay, so direct runoff hydrograph in depth. Okay, so that's 2.5 plus 2.5 is 5, and zero point 0.5 plus zero point 0.5 is 1.6. So 5 minus 4 is giving you the value of 2. Now this is your losses. Okay, how this 2 सेंटीमीटर could be termed as losses. देखो बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो, ये जो चीज है, मुझे मेरे पास डेटा है कि मेरे 4 घंटे के जो रेनफॉल मुझे मिला है उसमें अलग अलग अमाउंट का रेनफॉल हो चुका है। ठीक है, टोटल रेनफॉल, ये टोटल रेनफॉल का अलग अलग का जो वैल्यू है, एक का है 0.5, दूसरा है 2.5, तीसरा है 2.5 और चौथा फिर से 0.5। ठीक है, ये है मेरा टोटल रेनफॉल। ठीक है, उसमें से कुछ रेनफॉल मैंने मेजरमेंट किया है। ठीक है, कुछ में रेनफॉल मैंने मेजरमेंट किया है जो मेरे पास रेन गेज है। ठीक है, अब ये रेन गेज जो है उसका जो मेजरमेंट है वो उसका वैल्यू होगा 4 सेंटीमीटर का, क्योंकि वो रेन गेज के अंदर आया है। हम लोग ये सोच सकते हैं कि जो बाकी जो रेनफॉल है उसको हम लोग मेजर नहीं कर पाए। ठीक है, वो किसी दूसरे जगह पे या तो गिर गया है या फिर कुछ उसके साथ ऐसा हुआ है जो हम लोगों के मेजरिंग कैपेबिलिटी के बाहर है। ठीक है, तो सिर्फ थोड़ा बहुत अंश ही हम लोग मेजर कर पाए हैं। ठीक है, excuse me, I will tell you more about it. Okay, in this way I hope it will be easier for you to understand. So here it is. In simple terms, this is your rain gauge. Okay, now some rainfall is occurring in this way. Now due to this particular rainfall, what you can see that some amount of rain will be collected in this rain gauge. Okay, and after 4 hours we have measured that this value is having 4 centimeter. Okay, other amount of rainfall has occurred in this particular surface. Okay, in this surface, and that we could not measure, so that is what your loss. Okay, जो बाकी का जो रेनफॉल गिरा था जो कि हम लोग मेजर नहीं कर पाए, वही है मेरा लॉस। ठीक है, ये समझ में है अभी सभी को? Yes, sir. Now let us get back to this particular thing. So in order to calculate the phi index, what we need to do, that there is a value of loss divided by the duration of the rainfall. The duration of the rainfall was 4 hours and the amount of loss was 2 centimeter. So it is phi index is 0.5 centimeter per hour. Okay, so effective runoff hydrograph could be determined from subtracting the infiltration or phi index from the gross rainfall hydrograph. Okay, so gross rainfall hydrograph was your 6 centimeter per hour minus this phi index, that is your 0.5 centimeter per hour, it will be 5.5 centimeter per hour. Okay,
Now, I would like to give you one small assignment. Okay, so obviously I'll be sending it to you, and you will need to uh, do this problem of your own. Okay, and submit it by Thursday when our next class is scheduled. Okay, after doing this, obviously I hope that you will be getting some amount of confidence. So this is your home task. Okay, I will be sending this particular PPT to you so that you can prepare it for yourself, and then you will need to do this sum of your own and submit this to me by Thursday. Okay, so I would like to thank everyone for joining. But before ending today's class, I would like to hear something from you. This is about your CA1, okay, continuous assessment one. So you have got some email from our head of the department that our CA1 is likely to take place in the month of December. Okay, so in the month of December, we will be busy for the first half of the month. The syllabus for the examination is up to the precipitation and the measurement of rainfall. Okay, this hydrograph chapter will not be included in your CA1. Okay, and I hope that you people will be able to attend the exam. How the exams will be attended will be informed to you later on. Is there any question in your mind right now that is coming related to the exam or related to anything that is related to your study? किसी के मन में कुछ सवाल है अभी? Okay, so I hope that you do not have any question right now in your mind. Now I will be doing the manual roll call right now. Attendance will be taken on the basis of that one. If you respond only, then you will get the attendance. Otherwise, you are not going to get your attendance. Okay. So give me a few seconds only. It's about to open.